आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Did you know there are Muslims in Georgia? The Abkhazian people are a northwest Caucasian ethnic group that predominantly practice Islam. They are closely related to the Circassians, in which they are often part of the Pan-Circassian identity. Though prior to Islam, the majority of Abkhazians practice Christianity, in which it is stated that it arrived in the 1st century. Though full Christianization of Abkhazia occurred after Roman Emperor Justinian I sent proselytizing missions to the region. For many centuries, Abkhazia was a small independent nation in the Caucasus region. However, this changed in 1555 when the Ottoman Empire took the western parts of Georgia, while the Safavids took the eastern parts. This led to the Islamification of the Abkhazian people as the Ottomans ramped up conversion efforts. Russian conquest of Abkhazia began in 1810, though it was not until 1864 that they fully established control in the region. This led to a series of revolts by the Abkhazian people, firstly in 1866 and in 1877, which led to a harsh government reaction. Hello everyone and welcome to Mr. This is West Asia, and here is Georgia. Now let's see what Georgia has on its mind, shall we? Sakartvelo is what the Georgian people call this land, lodged under the stunning mantle of the Caucasus Mountains. This is a very ancient place, and people have dwelt here since eons immemorial, from the dark obsidian days preceding civilization's dawn, to elusive cultures of potters, metalsmiths, and winemakers. The peoples who would come to dominate the region, the Kartvelians, still live here, and their language is unrelated to any other. We call them Georgians, thanks to the Western adoption of the Persian name for them, and we may as well keep calling them that, if they don't mind. The first great kingdom of Georgia was Colchis, stretching out inland from the shores of the Black Sea. In Greek mythology, this was the place the hero Jason and his crew, the Argonauts, sailed to in search of the legendary Golden Fleece, which naturally was guarded by a dragon. Colchis declined after a number of 8th century BC attacks from powers like the Scythians and Assyrians, and ended up devoured by the Achaemenid Persian Empire around the mid-500s BC. Persian rule was efficient, but taxes were harsh and military conscription unavoidable. As Persia petered out, the next big thing in Georgia was the Kingdom of Iberia. Their dynasties of kings, of course, waged war on neighbors like Armenia and so on, but as the years passed, it became increasingly clear to the Georgians that they were not located in the most comfortable spot, geopolitically speaking. Rome to the west, Persia to the east, Georgia in the middle. Middle meaning often fought over by superpowers. This struggle popped up sporadically for many centuries. In the 300s AD, a Greek woman called Nina went to Georgia and preached, and King Mirian III converted, and Georgia became one of the world's first Christian nations, and it clung to this faith even through the time of Arab subjugation. Georgia was liberated in the 800s by Ashot, who reconquered and united Georgian lands and established the long-lived Bagrationi dynasty. More uniting of territories occurred with Bagrat III, who was titled first king of Georgia in 1008. This beautiful cathedral is an example of the architecture of Georgia during his reign. The golden age of Georgia began with the reign of David the Builder, who worked to enrich the nation and steadily kicked the Muslims out, achieving a great victory against a numerically superior Turkish force at the Battle of Didgori in 1121. Georgia attained its peak of prestige under Queen Tamar, when Georgians were lords of all the Caucasus, and there was abundant wealth and cultural flourishes and construction, and things were looking just fine, and then the Mongols invaded and ruined it. The first Mongol incursion occurred in 1220, and as the raids continued, the kingdom of Georgia declined and the people suffered horribly, and while some recovery began under Georgi V, the Turco-Mongol conqueror Timur, or Tamerlane, began invading in 1386, burning churches, demolishing cities, and slaughtering their inhabitants, enslaving others, essentially stomping Georgia into the dust, and it never again regained its former strength. Despite Tamerlane's vicious onslaught, the Georgians refused to accept Islam, and poor Georgia only suffered further oppression during the centuries of war between the Ottomans and Persians. King Erikle II strove to strengthen Georgia, but came to believe only Christian Russia could safeguard its existence, and allied with them. Iran was angered at this and invaded in 1795, and destroyed the capital, and a time of uncertainty
rapidly followed until the very certain Russian victory against Persia in 1813, leading to the absorption of Georgia into the Russian Empire. This was the age of Napoleon, and one of Russia's best and most brilliant generals at this time was a Georgian, Petre Bagration. As the 19th century matured, Georgia began adopting more European influences. Serfdom was abolished, a railway was built, industrialization increased, and cities grew bigger. The world changed very quickly for Georgians, and all sorts of new ideas began circulating. But this sort of thing was not tolerated after Tsar Alexander III took the throne. He wanted to Russify Georgia, and Georgians did not like this, and the writer Ilya Chavchavadze devoted his life to preserving and championing the Georgian language and culture. There was another more radical group, however, with more revolutionary ideas. One of its members was a certain Josip Jurashvili, who would one day become known as Stalin. His mother wanted him to become a priest, but he instead became an atheist and was spellbound by the theories of Karl Marx and ended up going off to Russia. It was a crazy time. The Tsars fell in revolution to the Bolshevik throngs, and when Lenin died, Stalin took control of the Soviet Union, viewed alternately as a merciless, murderous dictator and the strong leader who made Russia a modern superpower. He was in fact both these things. Over 300,000 Georgian soldiers died in fighting for Stalin's Red Army, which was ultimately triumphant in defeating Hitler in World War II. To this day, Stalin is highly esteemed in his home nation of Georgia. As part of the USSR, Georgia saw many improvements in everyday life, but its government was also notoriously corrupt. Many Georgians became increasingly discontented with the Soviet system and called for independence, which was officially declared on April the 9th, 1991. The first president swore to establish Georgian authority over the regions of South Ossetia and Abkhazia, which had been autonomous under the USSR and now declared independence. After a violent coup, Georgia entered a civil war, and there was war in South Ossetia and war in Abkhazia, the separatists supported by Russia. What basically happened was Georgia lost control of these regions, but does not recognize their independence, and neither does most of the rest of the world. The war in Abkhazia was particularly vicious, with over 20,000 Georgian civilians slaughtered and over 200,000 forced to leave the region. Naturally, Georgians weren't happy about how their government was running things, and there was a peaceful pro-Western revolution in 2003 to usher in a change of power. Did things get better? Not really. And after South Ossetians began bombing Georgian villages, Georgia's army stepped in to stop it, which prompted Russia to step in and stop them, and it was war. Georgia had no chance against Russian military might, and the two regions remained contested. Russia officially recognized their sovereignty, and so Georgia cut off diplomatic relations with Russia. So how was your day? Anyway, after millennia of upheaval and mayhem, Georgia somehow has managed to survive. A strong, resilient people. All of Georgia's Olympic gold medals are in sports like weightlifting and wrestling. Georgia today has a high level of human development, and while problems remain, as they tend to, big improvements have been made and hopefully continue. So that's it for Georgia, and that's all from me for now. Bye-bye! अगर आपको लगता है कि पंजाबी भाषा सिर्फ भारतीय पंजाब और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में बोली जाती है, तो आप गलत हैं। जी हाँ, आज के समय में पंजाबी भाषा सिर्फ पंजाब में ही नहीं बल्कि दुनिया के हर हिस्से में बोली जाती है। यूरोप के कई देश इस भाषा को मान्यता दे चुके हैं और सिक्खी की राह पर आगे बढ़ चुके हैं। इन्हीं देशों में से एक है जॉर्जिया, जहां एक समय में सिखों की संख्या 3000 तक जा पहुंची थी। आखिर जॉर्जिया में सिखिज्म की कहानी क्या है, यहाँ के प्रमुख गुरुद्वारे कौन से हैं और सिखों ने यहाँ अपना बसेरा कैसे बनाया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रीटा और आज की वीडियो में मैं आपको इन सारे सवालों के जवाब दूंगी। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी कर लीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। दरअसल जॉर्जिया में पंजाबी सिख किसानों का आना 2000 के दशक से प्रारंभ हुआ था। इन किसानों ने जॉर्जिया को कृषि निवेश के लिए एक आकर्षक स्थल के रूप में देखा, क्योंकि यहाँ सस्ती और उपजाऊ कृषि भूमि उपलब्ध थी। जॉर्जिया की सरकार ने भी कृषि पृष्ठभूमि वाले लोगों के लिए इमिग्रेशन को आसान बना दिया था, क्योंकि स्थानीय किसान अपनी जमीन का पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे थे। पंजाबी किसानों को यह भी विश्वास था कि जॉर्जिया जल्द ही यूरोपीय संघ का हिस्सा बन जाएगा, जिससे उनके लिए कनाडा और अमेरिका में इमिग्रेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। इसके बाद पंजाबी किसानों ने जॉर्जिया की सस्ती कृषि भूमि पर खेती करना शुरू कर दिया। रामदीप सिंह
सिंह पहलवान, जो एक पंजाबी सिख किसान हैं, उन्होंने जॉर्जिया में 30 हेक्टेयर जमीन खरीदी और वहां पर गेहूं, आलू, लहसुन और अन्य फसलों की खेती करना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि जॉर्जिया की मिट्टी पंजाब की मिट्टी के समान है और यहाँ की कृषि के लिए यह बहुत उपयुक्त है। जॉर्जिया में पंजाबी समुदाय की बढ़ती संख्या को देखते हुए यहाँ सिख धर्म और संस्कृति को बनाए रखने का प्रयास किए गए हैं। साल 2013 में एक सिख व्यापारी ने जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिसी में एक सिख गुरुद्वारे का निर्माण के लिए 2 एकड़ जमीन दान की। इसके अलावा जॉर्जिया में एक और गुरुद्वारा वहां के मशहूर शहर रस्टावी में स्थित है, जो सिख समुदाय के धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन का केंद्र बन चुका है। हाल ही में जॉर्जिया ने पंजाबी भाषा को कानूनी मान्यता देने के लिए ऐतिहासिक कदम उठाया है। जॉर्जिया राज्य विधानसभा ने एक प्रस्ताव को मंजूरी दी, जिसके तहत पंजाबी भाषा को कानूनी मान्यता प्राप्त हुई। इसी के चलते जॉर्जिया पंजाबी भाषा को कानूनी मान्यता देने वाला एक यूरोपीय राज्य बन गया है। जॉर्जिया संसद के इस निर्णय की तारीफ सिख अमेरिकन सोसाइटी के प्रमुख सुरविंदर सिंह लाली ने भी की है, जिन्होंने इसे सिख और पंजाबी समुदाय के लिए गौरवपूर्ण क्षण बताया है। जॉर्जिया में हुआ ये फैसला सिख समुदाय की बढ़ती शक्ति और योगदान का प्रमाण देता है। आपको बता दें कि पंजाबी भाषा दुनिया की सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में से एक है और इसकी उत्पत्ति दक्षिण एशिया के पंजाब क्षेत्र में हुई है, जो अब भारत और पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में स्थित है। खासकर कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में पंजाबी भाषा को वैश्विक स्तर पर सिख धर्म, साहित्य, संगीत और धार्मिक जीवन के माध्यम से संरक्षित किया गया है। जॉर्जिया का यह निर्णय सिख और पंजाबी समुदायों के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को सांस्कृतिक विरासत के बारे में और अधिक समझने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि जॉर्जिया में पंजाबी समुदाय का योगदान केवल सांस्कृतिक तौर पर ही नहीं है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर भी है। कृषि क्षेत्र में पंजाबी किसानों ने उपजाऊ जमीन पर खेती करके जॉर्जिया की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया है। इसके साथ ही पंजाबी समुदाय ने स्थानीय व्यापार और व्यवसायों में भी भाग लिया है, जिससे जॉर्जिया के लिए नए आर्थिक अवसर उत्पन्न हुए हैं। जॉर्जिया में रहने वाले रंजीत सिंह वहां के 150 हेक्टेयर जमीन के मालिक हैं। उन्होंने यहाँ पंजाबी भोजन, पंजाबी भाषी होटल और कैंटीन शुरू की है, ताकि वहां नए आने वाले किसान अपनी भाषा और संस्कृति के साथ जुड़ सके। जॉर्जिया में पंजाबी सिख समुदाय का योगदान न केवल कृषि बल्कि सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। पंजाबी किसानों के लिए जॉर्जिया एक उपजाऊ भूमि और सस्ती जमीन की पेशकश करता है और इसके साथ ही पंजाबी भाषा को कानूनी मान्यता मिलने से जॉर्जिया में सिख समुदाय का महत्व और बढ़ गया है। इस तरह के निर्णय जॉर्जिया के सामाजिक ढांचे में एक महत्वपूर्ण बदलाव ला सकते हैं, जो भविष्य में और भी विकास की दिशा में अग्रसर हो सकता है। आप जॉर्जिया में सिखिज्म को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हमारी ये वीडियो कौन से देश से देख रहे हैं या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।